Hello students, today we are going to discuss about divergence and curl. Let's firstly discuss that what is the divergence. If we speak roughly meaning of divergence is tendency of fluid to collect और डिस्पर्स एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे जो फ्लूइड की कलेक्ट होने की या फिर डिस्पर्स होने की टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। नाउ व्हाट इज डाइवर्जेंस इन फिजिक्स टर्म्स, हाउ कैन वी डिफाइन इट? तो वी कैन डिफाइन दैट द टोटल नॉर्मल फ्लक्स per unit volume through a closed surface drawn around a point when the volume enclosed by the surface tends to 0 means कि total normal flux per unit volume कि कितना फ्लूइड जो है वो सरफेस को लीव कर रहा है या फिर उसके अंदर एंटर कर रहा है एक क्लोज्ड सरफेस के अराउंड। जब हम उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही स्मॉल लेंगे, वॉल्यूम जो होगा दैट विल टेंड टू 0। इट मीन्स दैट विद इन ए स्मॉल वॉल्यूम वी हैव टू चेक द फ्लक्स एंड अराउंड क्लोज्ड सरफेस, और ये हमें क्लोज्ड सरफेस के अराउंड ही चेक करना होगा। नाउ फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कैन ऑल्सो write its formula. Now what is the formula for divergence? If we say divergence of electric field intensity, limit v approaches to 0, 1 by v integral vector E dot d vector s. Now from definition it is clear कि total normal flux पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1 बाई वी पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, तो हमें सरफेस जो है वो क्लोज्ड लेनी है अराउंड अ पॉइंट व्हेन द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस टेंड्स टू 0 विद इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। सो दिस इज द डाइवर्जेंस, डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस एंड फॉर्मूला ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ई इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। तो डाइवर्जेंस ई जो है हम इसको बोल सकते हैं दैट इट गिव्स अस फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ डाइवर्जेंस के बारे में अगर हम और पॉइंट देखें तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डाइवर्जेंस जो है वो ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हमें डाइवर्जेंस को डेल ऑपरेटर की फॉर्म में देखना हो तो वी कैन राइट डाइवर्जेंस एज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई इज वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ई। So this is all about divergence. Okay, now come to the second thing which we are going to discuss, that is the circulation. Before discussing the curl we have to firstly learn about circulation. What is circulation? Roughly it states about rotation of a fluid. रफली अगर हम बात करें तो सर्कुलेशन हमें फ्लूइड की रोटेशन के बारे में बताता है। एंड इन फिजिक्स टर्म्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड फंक्शन बी अलोंग अ क्लोज्ड पाथ। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो डेफिनेशन से ही बहुत क्लियर है कि लाइन इंटीग्रल अगर हम वेक्टर फील्ड फंक्शन बी का लें दैट इज वेक्टर फील्ड फंक्शन वेक्टर बी डी वेक्टर एल लाइन इंटीग्रल है, तो it will be in one dimension. तो line integral of a vector field function vector b along a closed path is called circulation. Now circulation is clear. Now as circulation is clear, now come to the curl. Curl represents the maximum value of circulation per unit area around a point. मीन्स कि जो हमारी सर्कुलेशन की मैक्सिमम वैल्यू है पर यूनिट एरिया हमें उसे देखना है।
तो उस मैक्सिमम वैल्यू को ही हम कर्ल बोलते हैं। एंड उसके लिए कंडीशन इज दैट व्हेन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड कर्व टेंड्स टू जीरो, दैट इज एरिया शुड बी मिनिमम, हमें बहुत कम एरिया में ही लेना है इसको। तो फ्रॉम डेफिनेशन हियर वी कैन ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन और वी कैन से फॉर्मूला लिमिट s approaches to 0, line integral of circulation, line integral of vector field vector b, that is it represents circulation per unit area, here s represents area and area should tends to 0, that is area should be minimum and this circle represents the closed curve. So from definition it is very easy to remember that maximum value of circulation per unit area around a closed curve when area tends to 0 represents curl of vector b. So basically curl is maximum value of circulation per unit area. Now as we know, divergence is a scalar quantity. Now curl is a vector quantity, in terms of del ऑपरेटर, अगर हमें कर्ल को del ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना हो, देन हाउ वी विल राइट del cross b. Here we will use vector product or cross product, but in divergence we have used dot product, so that is the difference. So hope so कि curl और divergence topics definitions and formulas are clear. Thank you.